बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद फ़ैया हुसैन आप तमाम नाज़रीन और सामाईन की खिदमत में बज़रिए याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल हाज़िर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद में नूर खां बाज़ार इलाक़े में गेटवेल क्लिनिक है और चैरिटेबल क्लिनिक है। ये इनकी खिदमत रोज़े रोशन की तरह आया हैं। यहाँ पर एक डॉक्टर साहबा तशरीफ़ लाई हैं जो बाहर से शिफाना रहती हैं, मुक़ीम बाहर हैं, वो अमेरिका में मुक़ीम है। और वो किस सिलसिले में यहाँ गेटवेल क्लिनिक का पे कैंप रखा गया है और तमाम आपको इन चीज़ों से मैं वाकिफ़ कराऊंगा। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर सैयद अली ज़ैदी साहब। मैं अली ज़ैदी साहब से ये तमाम तफसीलात दरियाफ़्त करके आपको रूबरू पेश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अली ज़ैदी साहब का हमारे याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल में खैर मकदम है। अली ज़ैदी साहब, आप ये बताएँ कि इस वक्त जो ये डॉक्टर साहबा तशरीफ़ लाई हैं, ये कहाँ से लाई हैं और किस सिलसिले में यहाँ पर और लोगों को बुलाया गया है, ये कैंप रखा गया है, ये तमाम चीज़ों से आप नाज़रीन को वाकिफ़ करवाएं। ये डॉक्टर महजबेन हादी है जो साइकियाट्रिस्ट स्पेशलिस्ट है, जो दिमागी जो डिप्रेशन और दूसरे जो मेंटली इलनेस जो पेशेंट्स रहते हैं उनका इलाज करती हैं। तकरीबन 20 साल का इनको तजुर्बा है, जो अमेरिका में ड्यूपेज में ये अपना ख़ुद का अपने दवाखाना भी चलाती है। और हमारी ये खुशकिस्मती है कि वो हैदराबाद तशरीफ़ लाई और हमने उन्हें मदऊ किया कि हमारी क्लिनिक में हमारे जो डॉक्टर की प्रैक्टिस होती है हमारे यहाँ पे जो जनरल फिजिशियंस है, और स्पेशल डॉक्टर तो नहीं आते हमारे यहाँ पे, तो ज़्यादा केसेस भी नहीं हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अगर बफ़र्ज़ मेरा अगर आ गए कोई पेशेंट तो हाउ कैन वी हैंडल दैम, ऐसे पेशेंट्स को जो मेंटली अबनॉर्मल रहते हैं, ओबेसिटी मतलब इसके केसेस जो होते हैं उनको कैसा हैंडल किया जाए, उस बारे में मैडम जो है इंट्रोडक्शन देंगी अपना, और अपने डॉक्टर से इंटरेक्ट करेंगे, डॉक्टर से बातचीत करेंगे और उनको समझाएंगे कि हाउ कैसे उनको हैंडल करना है। तो स्पेशली आज का जो सेशन रखे हम लोग यहाँ पे कि उनकी स्पीच रहेगी आधे घंटे की, उसमें जो है वो एक्सप्लेन करेंगे हमारे जो क्लिनिक के डॉक्टर्स है और स्टाफ है कि उनके साथ वैसे पेशेंट्स अगर आ गए तो कैसे उनको जो है हैंडल किया जाए और क्या उनका सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए, और कैसे उनको दवाएं कौन सी देना चाहिए, कौन सी एज में क्या उनको डिप्रेशन में है या फिर मेंटली इलनेस जो पेशेंट्स है उनके साथ कैसे उनके साथ जो है हैंडल करना चाहिए, उनको ये बताएंगी मैडम। तो इस सिलसिले में कोई यहाँ जो अतराफ़ अकनाफ हमारे जो दवाखाना गेटवेल क्लिनिक है, कुछ पेशेंट्स भी यहाँ पे आएंगे क्या? हाँ, कुछ पेशेंट्स को भी बुलाया हमने जो रेगुलर हमारे यहाँ पे आते हैं, जो दवाएं वगैरह लेके चले जाते हैं, लेकिन सही उनका ट्रीटमेंट हो रहा है या नहीं एनालाइज़ करने के लिए मैंने कहा कि आप लोग आए, तो डॉक्टर आई भी है यहाँ पे। तो तकरीबन 5-10 पेशेंट्स हैं हमारे यहाँ पे जो इस किस्म के डिप्रेशन के हैं और मेंटली इलनेस के हैं। तो इंशाल्लाह वो भी जो है हमारी सेशन के बाद, स्पीच के बाद उनको भी जो है मैडम देखेंगे। डॉक्टर महजबेन हादी जो एमडी है और मेंटली रिटार्डेड जो पेशेंट्स होते हैं, डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं, उनकी इलाज करती हैं वो। तौर से जो पैदाइशी माजूफ़ रहते हैं जहनी तौर से, उनको भी कुछ मदऊ किया गया आपने? हाँ, उनको भी बुलाया है। 2-3 पेशेंट्स वैसे भी है जो पैदाइशी जो इस किस्म के पैदा मर्ज़ में मुब्तला रहते हैं, उनके लिए भी जो है इंतज़ाम किया गया। वो भी उनको भी जो है मैडम अभी ट्रीट उनके बारे में भी वो उनके पास पूरा सिस्टम है। जैसा अमेरिका में आपको मालूम है पेपर वर्क ज़्यादा होता है, सब चीज़ एनालाइज़ करते हैं, ये सब टाइम कंज्यूमिंग है। तो बोलिए कि देखेंगे इंशाल्लाह उन लोगों की भी पूरी हिस्ट्री लेके उसके बाद में स्टडी करके उनका भी जो है सही इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा, लाइनअप में है नहीं है, और उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, किसी चीज़ों से रुकना चाहिए, और पेरेंट्स अगर बच्चा है या बच्ची है तो पेरेंट्स को कैसा हैंडल करना चाहिए, ये सब काउंसलिंग वो इंशाल्लाह ये सेशन के बाद करेंगे अपने इंशाल्लाह। तो ये इनका हमारे गेटवेल क्लिनिक जो चैरिटेबल है, इनसे कोई इनका राब्ता है, ये ट्रस्ट में ये भी शामिल है? जो है IMI हैदराबाद चैप्टर, IMI जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इमाम मेडिक्स इंटरनेशनल, उसकी भी मेंबर है और हमारे क्लिनिक से भी काफ़ी वाबस्ता है, जुड़े हुए हैं। 4-5 साल से हमारी जो जब से हम लोग ये प्रीमिसेस में आए हैं 5 साल से हमारे साथ कांटेक्ट में रहती है, हमारे ताउन भी करती है हमारे साथ, डोनर है हमारी, और उसके साथ साथ जो है ज़रीन मशवरे भी देती हैं वहाँ से, अगर कोई चीज़ की हमें ज़रूरत पड़े तो हम उनसे कांटेक्ट में रहते हैं। यहाँ पे कितने दिन मुक़ीम हैं? ये तो 1 वीक के लिए आए हैं खाली, अब उसमें से अपना टाइम निकाल के जो है अपने शिया कम्युनिटी और दूसरे जो लोकेलिटी में जो ऐसे पेशेंट्स हैं उनको देखने के लिए टाइम निकाली हो। माशाल्लाह।
आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। जब ये तमाम काउंसलिंग होने के बाद फिर एक मरतबा आपको मदऊ किया जाएगा। नाज़रीन, आप ये तमाम प्रोग्राम मुलाहिज़ा फ़रमाएँ और बिलखुसूस मैं आपसे बारहा मारूज़ा करता हूँ कि आप प्रोग्राम देखने के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। किसी किस्म की अगर कमी पेशी रह गई तो खादिम माज़रत चाहता है। और हमारे जो याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल के बानी हाशिम अली मिर्ज़ा, डायरेक्टर में सादत अली खान, खादिम तमाम टीम यही कोशिश करती है कि हमारे माशरे में, हमारी हैदराबाद, दक्कन और अतराफ़ व अकनाफ, हमारी कौम व मिल्लत में अगर कोई बेदारी का प्रोग्राम हो, शऊर की बेदारी हो और अगर कोई तरगीब के प्रोग्राम्स हो, ये तमाम हम नश्र करते हैं। इस मरतबा जो यहाँ पे गेटवेल क्लिनिक, चैरिटेबल क्लिनिक है, ये मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि इनकी जो खिदमत है रोज़े रोशन की तरह आया हैं। आप तमाम मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। और बिलखुसूस इनकी खिदमत पहले जो कोविड का पहली लहर चली थी उसमें भी इन्होंने बहुत सी खिदमत अंजाम दी है और दूसरी लहर में भी अभी भी मुसलसिल खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हैदराबाद, दक्कन में अगर कोई माहिर डॉक्टर आता है जो हमारी कौम से ताल्लुक़ रखने वाला हो तो इनसे रब्ता पैदा करते हैं और यहाँ मदऊ करते हैं और ये तमाम चीज़ों से वाकिफ़ करवाते हैं। यहाँ के जो इंतज़ामात है, इंतज़ामिया कमेटी है और यहाँ पे किस चीज़ की सहूलत दी गई है, अगर वो लोग आकर यहाँ पर मशवरा देना चाहते हैं, अगर इसमें कुछ इजाफ़ा करना चाहते हैं, इजाफ़त चाहते हैं, कोई किस्म की कमी पेशी रह गई तो उसे भी ये गेटवेल क्लिनिक और इनके तमाम अहदेदारान और तमाम लोग इसमें मशवरे लेकर उस पर अमल करते हैं। और ये तमाम वाक़िफ़ मैं आपको करवा रहा था। अब आप यहाँ का ये तमाम प्रोग्राम मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। और इसके साथ ही मैं आपसे मारूज़ा करता हूँ कि हमारे जो प्रोग्राम में किसी किस्म की अगर कमी पेशी रह गई है और कुछ चीज़ माहिर डॉक्टर के साथ अगर आप चाहते हैं कि एक प्रोग्राम रिलीज़ हो तो वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप ये तमाम चीज़ें मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। जाना कब है आपको? क्या करें? Assalamu alaikum everyone. I, Sayyid Ali Hussain Zaidi, President, Managing Committee and Administrator of Gatewell Charitable Clinic, take the pleasure on behalf of the management and our staff to welcome Dr. Fatima M. Hadi Mahjabben MD, who is a psychiatrist in child and adolescent psychiatry with more than 20 years of experience in the DuPage, United States. Her specialty in diagnose and treatment of mental illness such as depression and anxiety disorder, etc. So today we are honored to have her among us to share the experience and enlighten us for this disease. And also I want to give brief of Gatewell Clinic in Urdu, because she must know that she is in Hyderabad. So madam, ये clinic जो है 20 years almost we are finishing 20 years. We are in 2 rooms hospital in nearby premises. We have to transfer here almost 6-7 years here, new premises now. So we are started in a small place. Now it is not much huge, but spacious places for the doctors and to give our services. तो ये बोलना ये था आपको कि आपकी सपोर्ट की वजह से, आप भी 4 साल से हमारे सब डोनर है, and sometimes when we come in the dark, so her donation was like a candle in the darkness. So we are very grateful to you for that, and we hope that your support will be carry on in coming years, inshallah. So now I take my pleasure to welcome Dr. Mahjabben Hadi, and I request Mr. Taqi Zaidi, Joint Secretary of Management Committee, to give the bouquet. And welcome.
we are here, our doctors are here and our staff to take in light of the words and the experience, share the experience of 20 years in United States about the mentally illness treatment, how to treat the patient, how to take care of them, and what is the line of treatment for them. So I humbly request to Dr. Mahjabben Hadi to please come and give a speech about that. Shall I? Do you want me to sit down? First, I think I can sit down. I think I can sit down. Yeah. Thank you. Thank you. It's not working, I think. Hello. Hello. Assalamu alaikum, everybody. Okay. I think I'll take it. अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी। तो शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत जो आप लोग इतनी खिदमत करते हैं, ये तो अल्लाह ताला ही जज़ा देगा इसका। हमारा डोनेशन तो कुछ नहीं, लेकिन असल मेहनत आप सबकी है। तो मेरा मैं डॉक्टर बदर, उनके भाइयों को सबको वहाँ शिकागो में जानती हूँ, मजलिसों में वगैरह मुलाकात होती है। तो काफ़ी बरसों से वो लोग कह रहे थे कि मेडिकल लिटिल बिट ऑफ सर्जिकल तो है, मेंटल हेल्थ का बिल्कुल कोई सर्विसेज है नहीं। और अब तो ये पैंडेमिक कोविड आने के बाद तो बहुत ज़्यादा हो गया, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन एपिडेमिक हर जगह पर। तो अमेरिका, कनाडा में एवरी प्लेस इज़ पैक्ड। तो आई थॉट कि यहाँ पर भी ज़रूरत होगी, लेकिन अपने पास कुछ आइडेंटिफाई करने के रिसोर्सेज, सो व्हाई डोंट वी स्टार्ट समथिंग। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन कर रही हूँ, उसके बाद आई वांट टू नो द डॉक्टर्स स्पेशलिटी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज देन आई कैन ऐड। अच्छा, डू यू वांट मी टू कंटिन्यू उर्दू और इंग्लिश? I did my medical school here from Gandhi, medical college. Obviously, it's affiliated with Usmania University. And then I did my residency in adult psychiatry. So every one of us has to be trained in adult general psychiatry. Then I chose my fellowship for children and adolescents. So we are all as child psychiatrists, but by default we are also adult psychiatrists. That's how it is. So that's a big confusion. People used to take on the case and things, and that's not the case. So, and then obviously we have to, I went to both certifications. So that's my both certification and now the child is active. Lots of exams, but it was good. So I trained at Cleveland Health System in Ohio, so very, very reputable hospital. I was lucky I got good teachers, and then I've been in private practice since then. So I want to focus primarily on the clinical aspect, which is what we are doing. There's no need to know the research data and go into numbers, right? So that's why I thought we'll focus only on the practical aspect. I work primarily at an outpatient clinic, but then I'm affiliated to Northwestern Medicine. So I do have privileges at Northwestern Hospital. So they have a different level of care called day program. Then there's inpatient consultation psychiatry. So when I'm on the consultation liaison service, that's when I see a lot of medical surgical conditions, and that's when they need us the most. So that's my base. I'd like to know the expertise of you all. Sorry about that. So maybe, doctor, we can start with, or do you want to wait till I don't know if he's recording. I have done my internship in China. Okay. And I did my internship in Usmania Medical College. Okay. Then
Psych. BHA license from there. Okay. License. Okay. Okay. Then I came back a year back. Before I came back here, Right. I went back to Sydney. Right. And what's your specialty? Is it It's general GP? Okay. I have been working in COVID, pandemic. Okay. Okay. Intensive care for 2 years. 2 years. Wow. Mashallah. Mashallah. All pandemic cases managed. I'm sure. And what's the name again? How do I spell? Nikhat? Nikhat. Okay. NIKHAT. Okay. Okay. All right. And आपका डॉक्टर साहब? Jabin. Okay. Okay. Mashallah. I'm sure. Okay. I'm sure. Okay. With that case. Okay. Treatment. Okay. Okay. Right. Sure. Right. Mashallah. So very varied experience, both of you, and very different settings. That's I think this clinic is lucky to have both of you. अच्छा मैं दूसरे स्टाफ से पूछना चाह रही हूँ, नर्सेज एंड सपोर्ट स्टाफ. आप लोग तो यू आर फ्रंट लाइनर्स, राइट? यू डील विद यू आर द फर्स्ट वन हु टेक इन द पेशेंट. आप लोग को क्या अपने मुझे वर्ड मेंटल पसंद नहीं है, तो उसको हम लोग अक्सर इमोशनल एंड बिहेवियरल इलनेसेस कहने लग रहे हैं. सोसाइटी भी उसको वो वर्ड्स एक्सेप्ट कर रही है. तो आप लोगों को क्या नज़र आते हैं इमोशनल इश्यूज़ और बिहेवियरल इश्यूज़ जो मरीज़ आप जी? ओके. Okay. You're treating. Sure. Okay. Psychiatrist. So what I can do is, after I go through, I have a little agenda. After I go through the agenda, I can just briefly go over, because as one of the things I want everybody to know is the difference between a psychiatrist and a psychologist. There's a difference, and what do we do? And so then I'll touch upon just briefly the treatment of depression and anxiety, which even in North America, 60% of cases of depression and anxiety are treated by primary care. And only 40% of the complicated ones come to us. 60% of cases of depression and anxiety are treated by primary care physicians. There they call internist, general, what we call here, MD internal medicine, or they call as internal medicine and family practice and pediatrics. They're all clubbed under primary care physicians. So we are very used to that term. When we say primary care, it means pediatricians, internists, and there's another specialty called family medicine. So 60% of cases of depression and anxiety are treated by primary care. Because we are considered as specialists, only 40% of cases come to us, the more complicated, challenging ones. This way, our time is reserved for those people. So it's a very good idea to know some basic treatment plans of these illnesses. We can focus on the top two, depression and anxiety, for now, and then I can go over that format. Right, yeah. Yes, is that more a need of the community? Is that what the community is saying, or is it right? Do they want? That's what I want to know. Are they okay with taking medicines or no?
They are, okay. We want to take, But you want to. side effects and They are afraid. Okay. addiction, we want to avoid the medicine and little counseling and Okay. therapies. Okay. Okay. Because once they get addicted, Right. medicines. Okay. For them. Okay. So that's Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Very nice to meet you. MashaAllah. Very nice to meet you. Okay, afternoon shift. Thank you for coming earlier. So sorry. No, I'm so glad, and thank you for giving the coming early and sparing your time. So we are talking about a very important aspect of treatment, about medications versus counseling, and this is the debate. So we have to learn to first, number one, pick up on clinical depression. You know, I feel depressed is very different. I feel sad is very different from clinical depression. And how do you pick up? So I got these rating scales. I want to introduce the concept of rating scales, and we'll pass them around. This is for adults, and you'll give, okay. And the other is for teens. Okay, so teens, yeah. PHQ-9 for teens, PHQ-9 for. You're welcome to pass it around. So. Now, Ali Zaidi Bhai just showed me the X-ray room. So this is our mental health X-ray. And these have come out after years and years of research, very reputable universities like Johns Hopkins, Harvard, and the others. So it's not just somebody has come up with a few lists. It has been validated. And the score that we go by is accepted all over North America. In fact, the first step which patients are being subjected to in a primary care office even is for the support staff to have them fill the scale. Okay, so if you want to avoid the paper, garbage, they're talking about saving trees and others, you can put it on an iPad, and then give it to patients to fill. So someone who's technologically advanced can do that. So a score of, there are 9 questions. Anyone who scores 5 and above, you should put them in a different category. Okay, below 5, no need to worry about. Now, then from 5 and above, you have to then assess, is it mild or moderate or severe? And that can be a little tricky, but I'm willing to have ongoing Zoom consultations. I'd be happy to go over each of these with you all anytime you want. For mild cases, counseling or psychotherapy alone is enough. There's no need to consider medication, but for very mild cases only. Now, question number 9 is on suicidal thoughts. Anyone who checks off 1, 2, or 3 is not mild. We have crossed that category. So that's moderate to severe. Okay, so counseling alone is not going to be enough. Okay? So the treatment is based on, I had a very nice diagram, I forgot to get that, but I'll email it to Ali Zaidi Bhai. It's called as the biopsychosocial model of treating in mental illnesses. Like how with diabetes, without diet control, if you give them, it's not going to work. So this, in a similar concept, in our field, counseling, psychotherapy alone is enough, like for mild diabetes, right? But for mild illnesses, just psychotherapy is enough. And I will be introducing a psychologist from our community. She's called, her name is Dr. Mubarak Nawaz. And then I'm going to request her to do a separate workshop with you all to introduce what she does, how she does. Okay? So that's for mild illnesses. So the moment we have moved from mild to moderate to severe, you have to combine medicines with the therapy, both. And Harvard did a very good study on this, that if you don't give medications, these people will go and get addicted to alcohol and drugs because they need something to calm that mind. They can't live with it. So this proves the point. People always have this. You will get this question from patients all the time. दवा लेने से addiction होता क्या? अगर दवा से addiction कोई नहीं है, dependency नाम की कोई चीज़ नहीं है. Withdrawals
विड्रॉल डिपेंडेंसी तब होती है जब किसी को दवा छोड़ने से विथड्रॉल्स होते हैं. साइकोट्रोपिक मेडिसिन में विड्रॉल्स नहीं है, उसको सूडो विड्रॉल्स कहते हैं. तो उसमें अनकम्फर्टेबल फीलिंग होती है, बॉडी एक, डिस्कम्फर्ट, नथिंग सीरियस. सो दे आर कॉल्ड सूडो मीन्स फॉल्स, सूडो विथड्रॉल्स. तो इन दवाओं से जस्ट टू आंसर, देयर इज़ नो डिपेंडेंस at all. So they will keep asking you that question. You have to keep reinforcing that. Then next question will be कब तक लेना है दवा. तो research जी antidepressants. पहले when they first came out they said 9 months. Then looking at the course of illnesses, they've extended 9 months to 2 years now. So prepare the patients that for 2 years you have to take this course, and after 2 years you have to do a gentle taper. Never stop these medicines cold turkey. Right? So, and in these 2 years, what you have to do is introduce them to coping skills. How do you cope with depression and anxiety? That's where psychotherapy is very, very, very essential. You know? And that's a whole different topic. There are many different types of psychotherapies. There's something called cognitive behavior therapy. Cognition is thinking, behavior is depressed or anxious behavior. अब ये अगर ये बॉटल अगर आधी होती, आप किसी डिप्रेशन के मरीज़ से कहें इसको डिस्क्राइब करें, इंस्टेंटली जो बॉटल खाली है वहाँ दिमाग जाएगा. उनका डिस्क्रिप्शन ये होगा, बॉटल आधी खाली है, आधी फुल नहीं कहेंगे, बिकॉज दैट्स हाउ देयर ब्रेन थिंक्स. दे इंस्टेंटली गो टूवर्ड्स द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइव्स, नेगेटिविटी अराउंड दैम. सो कॉग्निटिव बिहेवियर इन थेरेपी में उनको अवेयरनेस क्रिएट की जाती कि आपका दिस इज़ हाउ यू आर थिंकिंग. वो तो अवेयरनेस इट्स ऑल supposedly going on in your subconscious mind. So they are taught about their thinking patterns. I have a very nice handout on different there's a name for it, irrational cognition, cognitive distortions. So there's a description of the thinking, there's a name for it, there's a definition. So they need to be educated about all of that, and then they have to learn the skills to think positively, you know, change your thought process. That's cognitive behavior therapy. Dr. Mubarak Nawaz does that, but she has another concept. She talks about the inner child. So where from age 0 to 7, some of the challenges you're a kid, you don't even know what you encountered. Apparently that has a long-term consequences. And I think from what I remember, Imam Ali has said the first 7 years are very important, and just those two just tie in very well with her therapy. So that should help. So there's a lot of importance of psychotherapy. But I met her yesterday. She told me something very interesting. She's also trained as a herbalist too. She's saying unless and until I give ashwagandha and other herbal medicines for 2 weeks, these people are not receptive to therapy, because their thinking is haywire, you know. And they just don't, they're not even there with her when she's teaching skills. So I was very surprised, because in US most of the psychotherapists don't give medicines right away, but she's using herbs, and patients here are very receptive to herbs. So she's right from the beginning, she's starting the biopsychosocial model. So so that would be, so if you can start this process of screening, you know, for every patient. And then once you screen, then you have to refer, and then you have to have people who will be ready to evaluate further. So what I'm thinking is maybe we can start off with Dr. Mubarak Nawaz as the first step to screen, and because she's in this field, she can identify the ones that are severe, and then I can do Zoom consultations from Chicago. But if some of the patients open up to you all, and you know that it's beyond mild, then we can bypass her. I'd be happy to see them first, and then when I feel the need, when they are ready for therapy, then I can involve her. Right? So those two channels. How does that sound? Right? Any questions with that? Because we are just in touch of the mild cases. Okay. Still we are trying to avoid medication. Okay. That point of view is Okay. as you are telling that Right. all it is moderate or
Moderate to severe, yeah. Right. Sure. 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 When you see the patients, Right. comes with the general complaints. Right. They are coming with cough, cold, Right. fever, Right. diarrhea. Right. So it's very difficult to bring from them that Absolutely. they're going through depression and anxiety. Absolutely. It's very rare we get the patients Right. saying by Right. themselves that we are under depression Right. or we are anxiety. Right. 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 Panic attacks. Right. So how did you That's an excellent question. So anxiety in a lot of people can present with physical symptoms, anything from head to toe. From headaches, dizziness, chest tightness, palpitations, all the way down, diarrhea, trembling, sweating, all that can be anxiety. And if that's very severe, then it's a panic attack. Generalized anxiety disorder is something where these are physical symptoms, so they may or may not have it. But with generalized anxiety disorder, there's constant worrying, non-stop worrying. They cannot turn off the switch. And along with it, you should have some other symptoms. Insomnia is very common. Irritable mood is very common, and not being able to focus. So what I can even do is with these common conditions, I can have a little template of some of the symptoms from DSM-5, which you can hang up in these offices. And then you can go down the list, and it'll be easier to tease apart symptoms from the others. Now, obviously, any physical symptom, top priority is the medical condition, right? We have to use you have to rule out cardiac conditions, GI conditions. That's a must. And you're so right. These are the people who utilize emergency room services, and hospitals spend millions of dollars on these patients, thinking it's a heart attack again. And in the end, they say we have exhausted everything. Sab try kar liye, symptoms ja nahi rahe hain. So then that is depression and anxiety. So in other words, you always have to keep that at the back of mind. But in your chart has to show that you've done a complete cardiac workup, complete GI workup, or whatever is the presenting symptom. If it's dizziness, then it'll be a neuro workup. Yeah. Right. these symptoms are mixed up? Very much. Yeah. That's another differential. So you keep depression at the back of mind. You don't have to think of it right away, but if the patient is receptive and to starting a medication, and if you feel strongly that she's already seen one of your colleagues, and these patients like to switch providers. It's very common because they feel this doctor must have missed something. So that's another red flag. If you feel that your colleague has done a thorough workup, but now she's coming to you. So that's a red flag. And now if you start the workup again, it'll take several months, right? So so if you're already suspecting depression, there's no harm in asking if she's ready for medications at that point. How do you decide medication necessary? Besides, one of the ways to assess severity is, the key word is functional decline. बहुत important है ये. तो suicidal thoughts एक important symptom है. दूसरा functionality में, as a woman, is she able to do her job as a mother, as a wife? Is she working? तो क्या अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा पा रही है या नहीं? अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है, और अगर हस्बैंड है, if he is the primary caregiver, कई जॉब्स चेंज हुए हैं, अपने एम्प्लॉयर से वार्निंग्स आ चुके हैं, those are all red flags. It means there's a functional decline. That is the key, besides the suicidal thoughts, to assess severity. When there is a functional decline, it means mild का case चला गया, moderate to severe के level पे आ रहा है. So those cases should be treated very differently. Those are the ones where Dr. Nawaz and I need to prioritize and see them first. Sure. Actually, most of the diabetic cases, Right. hypothyroid cases, Yeah. They will be under depression. Hypothyroid. That's a very common differential. Yeah. For that patients as well, we have to refer them to a psychologist. Not right away. Every case of depression has a workup for thyroid workup and anemia in women.
especially young girls in the menstruating age with anemia. It's very common to feel depressed. But PCOD with the hormonal problems, yes. So thyroid, especially hypothyroidism, very much looks like depression. In fact, when I was in training, I got one patient who was seen for the last 10 years by different residents. No one had ordered a thyroid profile, and she was being treated as depression. So I ordered a full thyroid panel, and then she was given thyroxine, and then there was no more depression after that. So every case of depression should have a full thyroid, not just DSH, a full thyroid functional panel, and a full anemia workup. Yeah. That's a whole different category. Postmenopausal, depression. Fibromyalgia also comes under that. To answer your question, fibromyalgia is a different set of presentation where these women have mostly physical symptoms. They may never say they are depressed. So, but they have to be treated with antidepressants, and Cymbalta is very effective in such patients. They don't respond very well to Prozac or SSRI group of medicines. So Cymbalta for depression in fibromyalgia patients, or in general, if you don't have time to pick up on fibromyalgia, depression that presents with a lot of physical symptoms, you should choose Cymbalta or duloxetine. Right? And for anxiety, gabapentin or Neurontin. So those are the top two medicines that have proven to be more effective with this presentation. Yeah. Anything else? Cover most of it. Okay. Suppose, what about the staff? आप लोग पहले देखते हैं ना patients को, आप लोग से ज़्यादा कुछ जिक्र करते हैं patients? नहीं। तो अगर हाँ जी अच्छा सपोर्ट वैसा हो रहा है। अच्छा आप लोग ब्लड प्रेशर वगैरह अच्छा आपको शायद अगर आप लोगों को कन्वीनियंट हो तो ये मॉडल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर्स टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, राइट, एंड दे आर स्वॉम्प्ड विद पेशेंट्स. तो ये रेटिंग स्केल्स जो आप देखे हैं, पेशेंट्स बहुत टाइम लगाते हैं उसको फिल करने के लिए. तो आपके ऑफिस में बैठकर जब पेशेंट्स भरने लगेंगे, इट्स अ वेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स टाइम. तो हमारे पास तो रिवर्स करते हैं. जब आप पल्स, ब्लड प्रेशर, वाइटल्स चेक करते हैं ना, नेक्स्ट स्टेप इज़ टू गिव दैट रेटिंग स्केल. तो डॉक्टर के पास जाने के पहले करना है. और इफ़ द स्कोर इज़ 5 एंड अबव, तब ये रेटिंग स्केल डॉक्टर के पास जाना है. बिलो 5 है तो आप वो पेपर श्रेड कर दे सकते हैं. देन यू डोंट इवन नीड टू वेस्ट योर टाइम ऑन दैट. So उसमें आपका it will be more time efficient. Otherwise, the waiting time for other patients will increase. So I don't know आप लोग कर सकेंगे या नहीं. Right. थोड़ा सा it's a change of routine, तो थोड़ा करना पड़ेगा. Right. And another thing you can do it, right? So another thing I can do is, once that, let's say you have a patient who has scored 6, right, and then has scored number 2 on question number 9, which is, I am suicidal, but I don't have a plan. So this patient you don't have to rush to the hospital. But if it's number 3 on question number 9, which means I'm suicidal, I have a plan, तो आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है. तो उसमें थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, फैमिलीज़ कैन होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल कि जब आप लोग पिकअप किए तो आप लोग क्या किए. तो हम लोग तो डायरेक्टली ER भी जाते हैं, वी कॉल द एम्बुलेंस. आप लोगों के पास यहाँ तो फैमिली मेम्बर्स तो रहते हैं, तो फैमिली मेम्बर्स से कहकर, या मुझे ये नहीं पता कि यहाँ से साइकियाट्रिक ERs अलग होते हैं क्या, या जनरल ER में ही असेस करें. ठीक है. So question number 9, number 3 on number 9 is the highest level of severity,
that person needs special assessment, right? Safety assessment, as we call it. So I can also email what we call as like a short intake form. So Dr. Nawaz and I will come up with a more customized intake. This way, once we know those are the positive cases, right, above 5, we can then have them fill the intake form, and then that can be passed on to her. I think where your expertise would be needed is to do a very brief clinical assessment for depression, and then talk about medicines, if they are ready for it. If they're not ready for it, if they want to talk more, then yes, refer them to Dr. Nawaz. Or if they're ready to see a psychiatrist directly, I'd be happy to see them via Zoom. Right. Because most of them don't want to, right? नहीं चाहते हैं, वो स्टिग्मा है अपनी कम्युनिटी में, राइट? हाँ, तो इसलिए थ्रू साइकोलॉजिस्ट अगर गए तो थोड़ा सा जब तक ज़रा आदत होती है. सो और फिर ट्रीटमेंट प्लान में लाइक आई सेड बायोसाइकोसोशल मॉडल है. तो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट इज़ मेडिसिन्स. वाई मेडिसिन्स, एक आपको मैं एक अच्छा डायग्राम भी भेजूँगी न्यूरॉन्स का. सो 2 न्यूरॉन्स, और how do the neurons communicate? They use dopamine, norepinephrine, serotonin. So depression is an illness, just like stroke, brain-based illness. So there are the amount of neurotransmitters that are needed is much less than what is needed for the brain to function. So pictures help. So I can send you some nice pictures. You're welcome to even hang it up here or in the offices and explain to them, this is a normal neuron. This is the neuron of a person who's depressed and anxious. So what do the medicines do? The medicines will make your neurons look like the normal neuron. So at least मेरे clinic में the pictures help them a lot. एक कहावत है ना, picture speaks more 1,000 words. So that makes a very big difference. So sorry I couldn't bring the pictures now, but now I have an idea what all you all need. Can you help us understand how to help a hypochondriac? I knew somebody would ask me that. You must be knowing a lot. Yes. For hypochondriacs, so because they come to you all, right? So that's a great question. No matter what you do, the concept of the fact that they are ill or they're going to get ill will always be there in their minds. So research-based and evidence-based study has shown that even though your entire medical workup may be normal, but you still have to have the schedule regular 2-monthly or 3-monthly visits. That's the only way. Never say you're fine, you go home. If something happens, तब आना हमारे पास. वो तो उसमें क्या होगा, जब आएंगे तो symptoms और severe होंगे, और आपको you will be ordering a lot more workup, which is a waste of money. Yeah. So they need scheduled visits with the primary care. They are going to be very resistant to go to a psychiatrist. But what you can do is, you have to portray that as, okay, I'm not going to have you be under a psychiatrist's care forever, but I need a one-time consultation. Okay, I need, because hypochondriasis can be comorbid with clinical depression or anxiety or something else. That has to be treated, and once that's treated, some of the hypochondriac symptoms reduce. So one-time consultation, you can say, and then scheduled visits with you all. So and that's where you might have to spend a little more time with these patients. They need that empathic connection, with you. So, and that reassurance that yes, your symptom was looked into. Yes, you have chest pain, but right now there's nothing cardiac going on. In the past, there was not. Then what about future? You cannot predict the future. But you can say, well, we are here for you. Let's schedule a visit in a month. And that is the only way to treat them.
therapy, they definitely need therapy. So the type of therapy which Dr. Nawaz does, the inner child in you, and she'll explain. It's very interesting concepts, so you should hear it. So hypochondriac patients will do very well with that, because a lot of what's going on is in their subconscious mind. CBT probably will not work for them. So if they are receptive to therapy, then she'd probably need to see a therapist regularly, and then, but for therapists usually like to see once a week or once in 2 weeks, but with the doctors, I think every 2 months is fine. So remember, scheduled visits with them, even if everything is normal. And how about the herbs, can we just hand them over to women which we feel are moderately depressed? Do the herbs help? They do, but I'm not allowed to say that, because my academy, this one, American Academy of Psychiatry, they will not allow. Because why? Because we don't know the standardization of these herbs, especially in this country. Where are they coming from? Is it mixed with steroids? Is it mixed with something else? We don't know. There is, in the US we have FDA. Our medicines are cleared by FDA, so we can say this is good, this is not good. Herbal medicines are not cleared by FDA. So even in US, we are not allowed to say this is good, this is bad. But Dr. Nawaz here uses ashwagandha. She uses St. John's wort. She uses, I don't know if she does not, but I talked to her about a valerian root for anxiety. So these are 3 common herbs that I hear work. I'm not allowed to prescribe those, but I don't see any harm, because at least you're getting some sort of the right chemical going on in their neurons, rather than letting them just go without it. It could act as a placebo actually. It could also, but apparently it does work in balancing out the imbalance. So it does work on serotonin and norepinephrine. But I think it works, it's good. And my experience with those patients that come to me from their primary care, they are in this mild category. Once you cross mild, even maybe up to moderate, but beyond moderate, herbs don't work. They don't work. They're not strong enough for that. And Ali Zaidi Bhai was talking about developmental delays. Kids born with neurological or developmental problems. So autism spectrum disorder comes within that. Developmental delays, mental retardation. So do you आप लोग देखते हैं क्या वो बहुत सारे? नहीं, उतने नहीं होते हैं. अच्छा. There's no pediatrician here. अच्छा. So आप लोगों की कट ऑफ एज क्या है पेशेंट्स की? You get all age, even 6-7 year olds भी? अच्छा, okay. Below that as well, okay. So you treat with that. अच्छा. So उसका जी. अच्छा ठीक. सॉरी. तो समराइज करने के लिए अब जो डिस्कशन हुआ है कि सबसे पहले ये अपनी कम्युनिटी के नीड्स क्या है, मेंटल हेल्थ नीड्स असेस करना है. तो उस असेसमेंट का प्रोसेस एस्टैब्लिश किए हैं रेटिंग, स्टैंडर्डाइज रेटिंग स्केल्स. PHQ 9 रेटिंग स्केल है जिसका हम डिस्कशन किए हैं. कट ऑफ स्कोर 5 एंड अबव एस्टैब्लिश हुआ है. और एक बार जब आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि ये केसेस हैं डिप्रेशन के, तो उसकी फिर थोड़ी सिवियरिटी असेस करेंगे, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर. और सिवियरिटी के बेसिस पर ट्रीटमेंट प्लान फॉर्मुलेट करेंगे. तो माइल्ड केसेस के लिए थेरेपी से शुरू करेंगे. और जो अपनी कम्युनिटी के साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट आर PhD लेवल, therapists are usually master's level. So she's a PhD level and she has agreed to give us some time, initially like 1 week a month and then more, and I'll let her speak for herself. तो mild cases उनसे शुरू करेंगे. और अगर moderate to severe cases है तो उसका as a doctor, as a psychiatrist मैं खुद evaluate करूँगी, Zoom evaluations.
तो और फिर उसके बाद दवाएं कौन सी इस्तेमाल करनी है, ज़्यादातर तो सबसे कॉमन दवाएं प्रोजैक है, फ्लोक्सिटीन, ज़ोलॉफ्ट है जिसका केमिकल नेम सर्ट्रलिन है, लेक्सप्रो पॉपुलर है, एसिटालोप्रैम, फिर सिलेक्सा और सिटालोप्रैम, ये 4 पॉपुलर है। पैक्सल या पेरोक्सिटीन मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि उससे वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत अच्छी दवा है लेकिन वेट गेन ज़्यादा है तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कौन सी दवाएं अवॉइड करनी है और कौन सी बेस्ट यूज़ प्रैक्टिसेस के। तो पेरोक्सिटीन की हाफ लाइफ छोटी होती है, तो ये लोग जब मेडिकेशंस मिस करते हैं तो उनको डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो जो पॉपुलर है, अच्छा बच्चों के लिए एनीवन अंडर 18 कोशिश कीजिए कि फ्लोक्सिटीन या प्रोजैक सबसे ज़्यादा यूज़ करें क्योंकि हाईएस्ट रिसर्च प्रोजैक की है बच्चों के लिए, फ्लोक्सिटीन। और ड्रग इंटरैक्शंस का ज़रा ख्याल रखें। प्रोजैक का मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है साइटोक्रोम P450 एंजाइम से, तो जो मेडिकेशन साइटोक्रोम 2D6 से जाते हैं प्रोजैक से ड्रग इंटरैक्शन होता है। कोई डेंजरस इंटरैक्शन नहीं है लेकिन थोड़ा लेवल इन द ब्लड, फॉर एग्जांपल एरिथ्रोमाइसिन है एंड सम अदर मेडिसिन्स, सो द लेवल इन द ब्लड माइट बी अफेक्टेड, तो आपको थोड़े डोजेजेस एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो अगर आपके पास ऐसे पेशेंट्स हैं जिसके जो बहुत सारे दवाइयों पर है तो स्ट्रांगली आई वुड सजेस्ट ज़ोलॉफ्ट और सर्ट्रलिन और लेक्सप्रो विच इज़ एसिटालोप्रैम। ये 2 दवाइयों का ड्रग इंटरैक्शन मिनिमल है, सो जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। अच्छा, जिसको GI सिम्टम्स ज़्यादा है, सेंसिटिव स्टमक है, नॉजिया ज़्यादा होता है अक्सर या डायरिया होता है, ज़ोलॉफ्ट अवॉइड कीजिए क्योंकि ज़ोलॉफ्ट का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डोपामिनर्जिक उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों को देर ऑलरेडी दे प्रोन टू एंड ऑल्सो नॉजिया एंड अदर GI साइड इफ़ेक्ट्स। तो जो उसका सेंसिटिव स्टमक है आई वुड सजेस्ट स्टे अवे फ्रॉम ज़ोलॉफ्ट। सो ये फ्यू क्राइटेरिया के बेसिस पे आप लोग खुद ट्रीटमेंट इनिशिएट कर सकते हैं। यू डोंट इवन नीड अ साइकाइट्रिस्ट इसके लिए फॉर दैट, एज लॉन्ग एज पेशेंट अगर रेडी है। सो SSRIs में आती है ये फैमिली में, तो सो आपको याद सिर्फ 4 मेडिकेशंस याद रखना है, प्रोजैक, ज़ोलॉफ्ट, लेक्सप्रो एंड सिलेक्सा। सिलेक्सा का एक चीज़ आप याद रखें, जिसको कार्डियक प्रॉब्लम्स है ट्राई टू अवॉइड इट। हालांकि ये सिर्फ रिसर्च माइस में हुई है, QT प्रोलॉन्गेशन माइस में देखा गया है और ह्यूमन बींग्स में तो हुई नहीं रिसर्च और कोई केस रिपोर्ट्स भी नहीं आए हैं। तो ट्रूली स्पीकिंग अगर आप किए भी तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन मैं उस कंट्री में प्रैक्टिस करती हूँ जो बहुत ही लीगलाइज्ड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है। अगर कुछ सपोज सिलेक्सा स्टार्ट करने के बाद कुछ हार्ट अटैक हुआ, इंस्टेंटली पेशेंट्स विल लिंक द टू, ऑनलाइन जाते हैं देखते हैं कि अरे इसमें तो कार्डियक साइड इफ़ेक्ट लिखा हुआ है, आपने क्यों शुरू की। तो जस्ट प्ले इट सेफ व्हेन you have other choices. Right? So few things, key important things to remember, and then you can start. So अगर उसको और नैरो डाउन करना है, the safest would be, especially women बहुत conscious है weight gain. Lexapro is the least, has least weight gain. So that would be probably a good choice. Prozac में भी थोड़ा सा weight gain होता है. पैक्सल के उतना नहीं होता है, लेकिन लेक्सप्रो से ज़रा ज़्यादा होता है. अच्छा, आप लोग फेमिलियर हैं दूसरे दवाओं से, जैसा SNRI फैमिली, इफेक्सर, सिम्बाल्टा, कभी यूज़ किया आप लोग? नहीं यूज़ किया, बट SSRI से ज़्यादा कंफर्ट लेवल. सो देन लेट्स स्टिक टू दैट. यहाँ तो ओवर द काउंटर में लेती है सब, राइट? अच्छा, दे हैव टू. अच्छा, और एंग्जाइटी आई थिंक देयर इज नो नीड, दोनों को सेपरेट डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत हाईली कोमॉर्बिड है. दे बोथ आकर टुगेदर इनवेरिएबली. यू रेयरली सी ओनली डिप्रेशन विदाउट एंग्जाइटी. सो व्हेन, और दोनों
इवन तो वो एंटी डिप्रेसेंट की कैटेगरी में आता है, मगर वो एंजाइटी को भी ट्रीट करता है। सो ये चीज़ आपको समझाना पड़ेगा मरीज़ों को। तो सपोज़ आपके पास एक पेशेंट है जो सिर्फ एंजाइटी के लिए आ रहे हैं, तो वो लोग ऑनलाइन देखेंगे, मैडम मुझे तो डिप्रेशन नहीं, आप क्यों मुझे एंटी डिप्रेशन दे रहे हैं? तो उनको आपको समझाना पड़ेगा कि इवन दो वो लेबल एंटी डिप्रेसेंट का है, बट वो एंटी एंजाइटी मेडिकेशन भी है। तो ये सवाल हमें अक्सर आता है। आई बिलीव यूएस में रीज़न ये है कि बहुत एक्सपेंसिव है लेबल चेंज करना। सो वो लोग जिस चीज़ के लिए पहला स्टडी होती है उसको वही नाम टिक करे जाता है। सो दैट्स एक ओवरव्यू है डिप्रेशन एंजाइटी ट्रीटमेंट का। अनदर आप लोग पता नहीं देखते हैं, बच्चे भी क्योंकि देख रहे हैं आप लोग, ADHD तो मैं बहुत देखती हूँ। तो वो जो मैगज़ीन है वो फ्री है, आप लोग उसको यहाँ ऑर्डर कर सकते हैं, यू नो, वेटिंग रूम में रख सकते हैं आप, पेशेंट्स लेके जा सकते हैं पढ़कर। इट्स अ वेरी गुड एजुकेशनल मटेरियल है। तो आप लोग पता नहीं ADHD देखते हैं नहीं, वहाँ तो इट्स वेरी जिसको बच्चों को स्कूल के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लर्निंग प्रॉब्लम्स आते हैं, डू दे कम हियर? अच्छा 2 इयर्स का, हाँ, पैंडमिक की वजह से अलग हुआ। राइट। अच्छा। Everyone is a little delayed on their education. ओके। तो अब जैसा चीज़ें जैसा थिंग्स नॉर्मलाइज होंगी तो आपको ये भी, अगर क्योंकि आप लोग में अब बच्चे भी देखते हैं, ये प्रॉब्लम इसको एस्केप करना बहुत मुश्किल है। इट विल कम टू यू। तो आप मे बी आपको ये द किड इज़ एंक्शस और रिफ्यूजिंग टू गो टू स्कूल, ये सिम्टम्स से आपको आएंगे, स्कूल रिफ्यूज़ल सिम्टम। बच्चा ये नहीं बोलेगा कि आई एम एंक्शस, आई कैन नॉट फोकस, तो स्कूल रिफ्यूज़ल कैटेगरी में आएगा ये। देन फर्दर एवेल्यूएशन जब आप करते हैं तब पता देन उसमें ADHD नहीं, क्योंकि ADHD एंग्जाइटी हैंड एंड ग्लव लाइक दिस। तो फिर उसके लिए आपको उसका वो होल सेपरेट डिस्कशन होगा वो अबाउट ADHD वाले, उसके रेटिंग स्केल्स भी अलग है, इंफॉर्मेशन वो अलग। तो अगर वैसा रहा तो दोज आर द केसेस भाई आई बी हैप्पी टू एवेल्यूएट विया Zoom, अगर आपको ऐसा लगा कि पॉसिबल ADHD हो सकता है। एनीबडी ADHD तो एडल्ट्स में भी होता है, लेकिन एडल्ट्स में कैच करना ज़रा मुश्किल है, मगर स्कूल में पकड़े जाते हैं ना, क्योंकि ग्रेड्स जब फॉल हो रहे हैं और स्कूल में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो एस्केप करना बहुत मुश्किल है। तो उमूमन बच्चे सिर्फ ये कहते हैं मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, या इधर दर्द उधर दर्द, फीवर, वो सिम्टम्स से आएंगे। तो वंस आप मेडिकल कंडीशन रूल आउट कर दिए, मेडिकली बच्चा फाइन है, तो थोड़ा डिटेल हिस्ट्री देना पड़ेगा। तो आप लोग अगर दे सकते हैं, टाइम है तो एक शॉर्ट इनटेक फॉर्म में भिजा सकती हूँ, प्राइमरली फॉर ADHD स्क्रीनिंग। तो ADHD अगर है उसमें पॉजिटिव रहा एंड मैं इवेल्यूएट करूँ, मैं डायग्नोसिस कंफर्म करूँ, तो ADHD इज़ अ वेरी न्यूरो बायोलॉजिकल डिज़ॉर्डर। उसमें मेडिकेशन इज़ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, हाँ, उसमें थेरेपी सेकेंडरी होता है। तो उसके स्टिम्युलेंट मेडिकेशन, रिटलिन, एडरॉल आप लोग सुने होंगे, राइट? तो दे वर्क लाइक मैजिक, नाइट एंड डे डिफरेंस। वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स टू ट्रीट इज़ ADHD बिकॉज इट्स वेरी रिवॉर्डिंग। बच्चे की ज़िंदगी बदल जाती है, उसका जो सेंस ऑफ फेलियर होता है वो सेंस ऑफ अचीवमेंट बन जाता है, पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। नाइट एंड डे डिफरेंस। और किड्स स्कूल में फेल होने के बजाय दे गो ऑन टू यूनिवर्सिटी लेवल। बहुत ही ट्रीटेबल डिज़ॉर्डर है, बेहतरीन मेडिकेशंस हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम है, मगर ये पिकअप नहीं होता है। पिकअप क्यों नहीं होता? एक कहावत है ना, व्हाट द माइंड डज़ नॉट नो द आई डज़ नॉट सी। तो आपको अगर पता नहीं है कि ये इस तरीके से प्रेजेंट कर सकता है तो आप उस तरफ सोचेंगे ही नहीं। तो ये बहुत रिवॉर्डिंग चीज़ है ट्रीट करने के लिए। तो अगर आप लोग चाहें तो उस पर अपन फोकस कर सकते हैं जब चीज़ें जैसे नॉर्मलाइज होंगी। तो ये कॉमन कैटेगरीज, दीज आर
फिर भी ईजियर कंडीशंस टू ट्रीट। आप जो अली सैदी भाई आप जो कह रहे थे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम और मेंटल रिटार्डेशन, डेवलपमेंटल डिलेज, दीज आर मोर कॉम्प्लिकेटेड। और कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि डॉक्टर का रोल कम है इसमें, क्योंकि बाय बर्थ पैदा हुए ना, तो उसमें इन लोगों को प्रॉबली मैं डायरेक्टली इवैल्यूएट कर सकूँगी। आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा उसमें ज़्यादा। यू कैन सी मोर ऑफ द ट्रीटेबल कंडीशंस। ठीक है, राइट, श्योर। और मुझे इन लोगों को जो एडिशनल सर्विसेज होनी पड़ेंगी उसके एक लिस्ट ऑफ रिसोर्स, यहाँ मुझे यहाँ का रिसोर्सेज पता नहीं है, लेकिन वो मालूम कर सकते, राइट, ठीक है। और यू फॉलो देम, ओके, ठीक है। देन उसके बाद आई कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली विद यू ऑल अबाउट दैट, ठीक। वो इट्स अ वेरी डिफरेंट कैटेगरी। I don't know if I'm missing any other conditions. Alcohol, drugs, separate issue है, no? तो I don't know आप लोग यहाँ encounter करते हैं जो patients यहाँ आते हैं, उतना नहीं। Alcohol and drugs, marijuana use, alcohol नहीं, शुक्र है मुस्लिम पर, तो शुक्र है, एक बहुत बुरी बला से बचे हुए हैं। चले, बहुत अच्छा है। Dementia, elderly patients आते हैं बहुत, हाँ, रेयर, उतने ज़्यादा नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो आप लोगों का मोस्टली यंगर पॉपुलेशन है, वेरी यंग टू मिडल एज। अच्छा, ठीक है। सो दैट्स द पॉपुलेशन आई सी। तो दैट्स गुड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑन गोइंग रहना पड़ेगा, राइट। एक बार के ये डिस्कशन से ख़त्म नहीं हो गई है बात, क्योंकि जैसा अब आप लोग देखने लगेंगे आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, व्हाट डू वी डू नेक्स्ट, वेयर डू वी गो नेक्स्ट, राइट, ठीक है। और अब और कुछ एनी क्वेश्चंस और किसी को? काफ़ी, आई थिंक आई गॉट रियली गुड क्वेश्चंस फ्रॉम एवरीबडी। आप लोग सब सपोर्ट स्टाफ, आप लोग अब खामोश है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं इंशाल्लाह आऊँगी आप लोग के ज़्यादा सवालात होंगे, क्योंकि आप लोग जब रेटिंग स्केल्स भरेंगे ना तब आप लोग फ्रंट लाइनर्स रहेंगे इस चीज़ के लिए, इंशाल्लाह। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये मैं यहाँ छोड़कर जाऊँगी आप लोगों के लिए, आई फॉरगॉट टू टेल। इसमें कई कंडीशंस हैं, अगर पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग इसको इसका कॉपी कर दे सकते हैं, वेबसाइट्स वगैरह है। एवरीथिंग फ्रॉम बेड वेटिंग टू व्हाट इज़ एस्पर्गर टू स्कूल रिफ्यूज़ल, एंड इसके आप हैंड आउट दे सकते हैं इसके। तो ये पूरी आप लोगों के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है आप लोगों के लिए। Sure. तो कहाँ जाए, यहीं पर या फिर? अच्छा, ठीक है, अच्छा, ठीक है। ओके, उर्दू एंड इंग्लिश। अच्छा, सदा अच्छा, यहीं का हैदराबाद का है ये? अच्छा, डेमोक्रेटिक न्यूज़, अच्छा, शेयर कर। चलिए, माशाल्लाह से अपनी वॉइस है। हाँ, ज़रूर। हाँ, तो उसका आपको इंट्रोडक्शन ये देखो है, डबल बोर्ड सर्टिफाइड चाइल्ड एडोलेसेंट एंड एडल्ट साइकियाट्रिस्ट, वो डेफिनेशन है। डबल बोर्ड सर्टिफाइड, बोर्ड POARD, बोर्ड सर्टिफाइड adolescent, teenagers to adolescent and adult psychiatrist trained in the US. तो आप ये कह सकते हैं हम ग्रेजुएट ऑफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी, 2003 से
नाजरीन, ये तमाम प्रोग्राम आप मुलाहिज़ा फरमा रहे थे, हमारे याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल की जानिब से प्रोग्राम पेश किया जा रहा था। बारहा मैं आपकी खिदमत में मारूज़ा करता हूँ, जिस तरह ये प्रोग्राम आप मुलाहिज़ा कर रहे थे, अगर चाहते हैं कि और कुछ आपके सवालात हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हम इंशाल्लाह हमारी डिस्क्रिप्शन में यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डाल देंगे। यहाँ से भी आप रब्त पैदा करें और ये डॉक्टर साहबा से भी जो तमाम मशवरे इन्होंने दिए हैं उस पे अगर आप लोग समात कर चुके हैं, अगर कुछ कमी पेशी रह गई तो आप रब्ता पैदा करें। कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा यहाँ गेटवेल हॉस्पिटल का और जो ज़िम्मेदारान हैं। और मज़ीद मैं आपकी खिदमत में क्या अर्ज़ करूँ कि बारहा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि आपस में आप एक दूसरे से इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए और चाहते हैं कि और इस तरह के तरगीबी, चाहे वो सेहत के ताल्लुक़ से हो, इल्म के ताल्लुक़ से हो, हमारी माशियत के ताल्लुक़ से हो, और रोटी रोज़गार ये तमाम माशियत में आते हैं। और जो भी हमारी कौम व मिल्लत में कमी पेशी रह गई है, उन चीज़ों में अगर चाहते हैं कि कोई खुसूसी प्रोग्राम किसी उन्वान के तहत हम नशर करें और माहिरीन के साथ, तो आप तमाम हमारे याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल के बारे में हाशिम अली मिर्ज़ा से रब्त पैदा करें। और इसी के साथ आप दुआ में याद रखें और दुआ है कि परवरदिगार आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हमसे हमारी इस खिदमत को कबूल फरमा, मज़ीद तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, हमें दुश्मनों के शर से महफूज फरमा। इसी के साथ आपका ख़ादिम सैयद फ़िया हुसैन रुख़्सत होता है। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।